Hello friends, welcome everyone. Welcome to Exploring Goals. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର important session. Welcome friends, welcome. ଆସିଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି start କରିବା pedagogy ର ଆଜିର ये महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण session को. Welcome to Exploring Goals. इजी फैमिली को समस्त को स्वागत. जदि नुआ छ सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करबा को भूलिबनी फॉर ऑल लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस. लाइक शेयर कमेंट भी करि दबो एंड एक्सप्लोरिंग गोल्स एप्लीकेशन रे इफ यू वांट टू जॉइन यू कैन contact us. कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कवरेज ऑफ सिलेबस ई बुक्स पीडीएफ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सब जिंस अवेलेबल अछि एंड ये होछि फॉर मोर डिटेल्स. गुड इवनिंग कोन हला कोन 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 अछि हां congratulations to each one of you. बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस टू इजी फैमिली फॉर रीचिंग 100K सब्सक्राइबर्स. ओके एप्लिकेशन B.Ed एंट्रांस 2026 DLED 2026 पई कोर्स रही छी. ये सेमिति कंबो सब्सक्रिप्शन ऑल टीटी एंड टीचिंग एग्जाम्स पई सबु टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड टीचिंग एग्जाम्स को फोकस करिवो एंड ओडिशा एजुकेशन सर्विस टीचर एजुकेटर ए कोर्स मध्ये रही छी एंड बाकी रहला बाकी सबु कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहा ओडिशा गवर्नमेंट जॉब पई ता पई रही छी ए कोर्स. Congratulations, congratulations, congratulations. आज किंतु क्वेश्चन देखिले पेट कुड़कुड़ कुड़कुड़ हो सर टिके पेट खराब अछि सर आसुची कहबो त. अच्छा 100K सेलिब्रेशन चलछि कि ओ ओ अच्छा थैंक यू वेलकम एवरीवन वेलकम जोहार जोहार प्रणाम समस्त को शुभ संध्या स्वागत. प्रथम प्रश्न स्क्रीन रे डेवलपमेंट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस. Development is a continuous process, but it is not uniform for all children. Which of the following statement best explain this concept? आराम से नहीं की टाइम नहीं किया. Take time and answer. How about ठीक आराम से. Congrats Rasmi, Upendra, congratulations. Hello तो अमित. Okay, good. प्रथम प्रश्न डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस बोली कहला. डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एवं ये यूनिफॉर्म नुहे नहीं कि but not uniform for all children. Which of the following statement development follows a sequence but may vary pace and degree across children. जोड़ा तुम करियो बहुत सुंदर आंसर देल. I am very much satisfied with the answer given and it's the correct answer B. ठीक करियो. Congratulations to each family. Congratulations to each one of you. Yes, development follows a sequence but may vary in pace and degree across children. तेणु not uniform for all children किंतु continuous process. Yes, be correct. आज टिके धैर्यर सहित करबा पड़ियो बिकज जानिछ सब बेले धैर्य निहाती हमको दरकार. पेशेंस बिना किछि भी हबोनी. A child raised in a resource rich environment with access to quality education, health care and recreational facilities is academically not performing. Is academically full stop जो असुविधा होछि. Is academically not performing according to the interactionist perspective of development. What could be a possible reason for this? आगे भल से बुझी जाओ क्वेश्चन टा कहूँ कौन कि माने एनवायरनमेंट बढ़िया पाई छुआटा एनवायरनमेंट बढ़िया पाई किंतु परफॉर्मेंस भलो ना. रीजन इज सी. यू आर करेक्ट. कहीं कि ना there is mismatch between child's inherited abilities
and the provided learning environment with फरक अछि. Environmental factors are more significant than heredity. एटा केबे भूल रे कहबोनी. Both are important ना. Okay. देखो एटा बहुत सिंपल जिनसटा proceeds from general to specific our right answer. Okay. Broad scribbles with a crayon. नहीं कि तो नॉर्मली कलर धरिकी गार पकेवा घसीबा ए जो जिनसटा एटा हला स्क्राइब करछु बा गारुछि आगो कोन करिवो आगो छुआ को दे दियो तो कलर पेन दियो कि जहां भी दियो एटा ही करिवो से एटा ही करिवो से एटा ही करिवो से. Okay, and later progress to draw precise shapes like circle, square ये परे करिवो. So ये होची general to specific, proceeds from general to specific. बुझी गलो समझते? क्लियर? आगे बढ़े. चलो बेटा. Assertion region. Socialization plays a crucial role in shaping a child's personality and behavior. Socialization is the process by which individual acquires values, belief, behavior appropriate to their society. वॉल्यूम कम अच्छी. अरे एमती केमती मत मैसेज कर दो प्रदीप. ए राइट आंसर. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ओके हला ठीक. चलो. Which of the following examples best illustrates the concept of assimilation in Piaget's theory of cognitive development? मजा नहीं की करो आराम से. कम आसुची साउंड से आगुरु कहून मते गुड़ा कंप्लेन कर डेरी हो जाए डेरी रे. ହେଇଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ କିଛି ଆଉ. ଏବେ ଦେଖିଲ ଠିକ ଆସିଲା. ଇଜ ଇଟ୍ ବେଟର ଦେନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଅର୍ କେମିତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟୁ ଭଲ ଆସିଲା କି ଏବେ? ଏବେ ଦେଖ ଠିକ ଆସିଲା କି ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଅଛି ଅପସନ୍ ମୋ ପାଖରେ. ଆଇ ହାଭ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଅପସନ୍ସ ୱିଥ୍ ମି. ହଁ ଜାଣିନ ମତେ. ओके सो हियर इज योर नंबर 5. सेम ଲାଗୁଛି. ଏବେ ତାହେଲେ ଗଜବ କ'ଣଟା ଗୋଟେ କରିବା. ओके एबे देखिलो. हाँ एटा हिच रे. एबे हिच बोधे देखिलो. देखी को. Oh, which of the following examples best illustrates concept of assimilation Piaget of cognitive development कहला. पहले right answer child. हाँ कौन कहूच? A child builds completely new mental schema when encountering an unfair object for the first time. ये completely new आसिला मिसिला परा. आसिला मिसिला परा. अरे a child who learns that dogs bark and applies this knowledge with seeing new dogs. हे हबो. नहीं फुल वॉल्यूम नहीं से मोटू सहित कनेक्ट हे नथिला. एबे मोटू सहित कनेक्ट हला. कंपेई दो पूरा डीजे. अरे ए हबो माने कुकुर भुकिला तो हाँ एटा भी कुकुर ये भी भुकिबो.
କିଛି ଗୋଟେ ଜାଣିବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କିମା ପା ଅଲରେଡି ଥିଲା ସେଥିରେ ମିଶିବ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନ୍ୟୁ ଆସିମିଲେସନ ଟା କିଛି ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଥିରେ ଆସିଲା ଆଉ ମିଶିଲା ବୁଝିଲ ହଉ ଏଇଟା ଆସିମିଲେସନ ହଉ which of the following classroom practices best demonstrate Vygotsky's theory of learning Vygotskyଙ୍କର theory of learning को best demonstrate करुछि को classroom practice देखु देखु कर दउछ रे बढ़िया कृष्णा थैंक यू हाँ A teacher provides help by breaking down complex problems into manageable parts and gradually এটা তো ক্লুজ এটা তো হেল্প এটা তো টেম্পোরারি সপোর্ট এটা তো স্কাফোল্ডিং রিডিউসিং হেল্প অফ স্টুডেন্টস अगेन ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଆସି ଯାଉଛି ତାପରେ ତ ସେ ଯୋଉ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇ ଦଉଛି ହେଲା ମଜା ନିଅ which of the following statement best explains the interaction between heredity and environment in child development yes very good best explains interaction between heredity and environment heredity completely determines again I environment solely set again I heredity sets the potential but the environment determines how the potential is realized wow gajab both heredity and environment are unrelated हुआ गो इटा केनता कहसी जगा मते तो गुलगुला लागছে एंता जिनिसटा देखले बुझलो के नहीं केन हिसाब रे अनरिलेटेड हवा इंटर रिलेटेड परे अनरिलेटेड कहि दबु तुई छाड़बी तते मारी पकामी काना हवा सी चलो आदे देखो हेरेडिटी और एनवायरनमेंट केंदा गजब तो भल लागला चलो ठीक আছে তো হেরিডিটি আর এনवायरनमेंट দুইটার ইকুয়াল রোল রয়েছে पूरा एग्जैक्टली इक्वल 50% कहवारटा भूल है बाकी दुईटार इंटरप्ले रही ओके क्रिस क्रस हाँ चलो 8 which of the following principles of development is most applicable when designing teaching strategies for a mixed ability classroom ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା କଣ କରିବା डिजाइन की डिजाइन करे घर नहीं टीचिंग स्ट्रेटजी अच्छा टीचिंग स्ट्रेटजी डिजाइन करिया का ପାଇଁ मिक्स्ड एबिलिटी क्लासरूम ପାଇଁ माने क्लासरूम रो भी मिक्स्ड एबिलिटी अछि कि नहीं क्लासरूम भीतर जो छुआ अछंती तांकर मिक्स्ड एबिलिटी अछि अच्छा तो को टाइप रो प्रिंसिपल टा ठीक हबो एंता के एते जल्दी केंता करी प्रकाश हो इन्फ्लुएंस सोलली बाय बायोलॉजिकल बेले महा मुश्किल करला इटा फिर हां डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल yes good development is predictable so teaching method should focus only on fixed milestone इने तो असुविधा कर देला कि नहीं only गुटे कर देला और फिक्स्ड कर देला वाले रिजिड कर देला केबे चांस नहीं नो development is multi dimensional and teaching strategies should address cognitive emotional growth नहीं कहें development social stops and after adolescence so teaching strategies should focus only on child growth yes हाँ सविता के जाने हो एड्रेस भूली जाई छे assertion reason type question देखो मजा नहीं हो children in the concrete operational stage can solve problems involving conservation and classification concrete operational CCS conservation classification and seriation तो एटा लागू हैला या concrete operational stage is characterized by development of abstract thinking hypothetical नहीं है क्या एटा तो formal रो कथा कहि देले आपण हेले A is true और R is false is right कहीं ये होला formal operational stage the last stage of Jean Piaget चलो according to Vygotsky
How do cultural tools, that is language, symbols, and technology, influence child's development, child's cognitive development? बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ଏଠି କହିଲା ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ହିସାବରେ କଲଚରାଲ ଟୁଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଯେମିତିକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା, ସିମ୍ବଲ ହେଲା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲା, କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଛୁଆର ମାନସିକ ବିକାଶ? କାହିଁକି नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट କାଟିଦେଲ आंसर ଏଇଟା ହବ? କାହିଁକି ଏଠି ଲିମିଟ କହିଛି, ଅପସନ ସି ରେ ଲିମିଟ କହିଛି ନାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ରେ କହିଛି only यूजफुल, ନାଇଁ କି only यूजफुल, ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ସବୁ କାଟିଦେଲ, କଟାକଟି କରିଦେଇକି ବି କୁ ପାଇଲ, ଏଇଆ ତ assertion reason। ଭଲ ଭଲ ଭଲ, ଭେରି ଗୁଡ। The concept, the concept of gender as social construct means that that gender roles can change over time and vary across different cultures. Gender roles are universally fixed. Thank you, Shavita. And are it fixed quad wala? Yeah. It is true. Gender roles are universally fixed. And any differences in role between society are the result of biological factor. Society रे biology तमे पुराई देलो, यूनिवर्सली फिक्स्ड कर देलो जेंडर रोल को, आ तापर कहलो जे हां एटा ठीक बोली, मारी दबरे मते कोन हबो सी एबे आसिलो ना। हां चलो, what is the significance of assistive technology in an inclusive classroom? Assistive technology कोन रे inclusive classroom रे? देखो बाईसी नुह अमूल, सी 12 नंबर मु देखैछि, बाईसी नुह, एटा फास्ट कथा कहि दउछि देखो। हाँ कौन 100 के हला बोली 12टा 22 सीधा। हाँ एथर हला एथर be right. It provides tools that help students with disabilities assess the curriculum, engage more fully in classroom activities. बढ़िया सरोज, झरणा, रेखा, सविता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन। हाँ प्रोवाइड टूल्स दैट हेल्प, हाँ सिलु, यस assertive माने ताको हेल्प करबा, इजियर कर दबा। ओके हरप्रिया, टेक केयर। In Kohlberg's theory of moral development, which stage is described by individuals making moral decisions based on abstract principles such as justice, rights, and equality rather than societal laws? काहाको इंपोर्टेंस होची, which stage is described by? हाँ देखो कोलबर्गर मोराल डेवलपमेंट थ्योरी कहूची जे कोउ स्टेज रे मोराल डिसीजन नौचे आमे abstract principles such as justice, right, equality को नेकी। तो बड़ जिनस कथा एटा कहला, बड़ जिनसटा टिके बड़ स्टेज को जीवा, तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल को जो माने जाइछो ठीक जाइछो। हाँ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल को पळेवार थिला, तमे उद्धार रहिलो, काहे कि एटी कहिछ जस्टिस, राइट एंड इक्वालिटी रो कथा। हाँ जस्टिस, राइट्स, इक्वालिटी परा, इक्वालिटी यूनिवर्सल। ହଉ ଚଳିବ, ଚାଲ ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଭାବି ନଥିଲି ଆଜି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ତମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ ଡରିବ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପାରାଗ୍ରାଫ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ପଢୁଛ। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ।
In a child-centered educational approach, the teacher's role shifts from being the sole source of knowledge to a facilitator who guides students in their learning. Badhiya. This approach emphasizes the importance of child's active participation, interest, and learning pace. It encourages children to take responsibility for their learning, promotes critical thinking, fosters creativity through hands-on activities and exploration. But yeah, which of the following best describes the main goal of child-centered education in a classroom setting? ଭଲ ତ କଲ ବଢିଆ କଲ ଗଜବ କରିଛ ଭେରି ଗୁଡ। ହଁ ମୁଁ କଣ କରେ କହିଲ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢେନି କି ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ତମେ ବି କରୁଥିବ କେହି କେହି ମୁଁ ଜାଣିଛି କରୁଥିବ। ମୁଁ କଣ କରେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଲା ବେଳେ କଣ କଲୁ ଏ କି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇଛୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଏ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି କହି କହି ତାକୁ ଯିଏ କରିଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ଗାଳି କରି କରି ସେଟା ସଲ୍ଭ କଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ମଜା ଲାଗେ ନାଇଁ। ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଚାରିଥିବ ତାକୁ ଓହ କଣ କରିଛୁ ବଢିଆ ସବାସ୍ କଣ ଲେଖି ଏବେ ବହି ଗୋଟେ ନୋବେଲ ଫୋବେଲ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଓଃ ଭୟଙ୍କର ଲେଖାରେ ମଜା ଆସିଗଲା ଭାଇ ଭାଇ କଣ ଲେଖିଛୁ ରେ ଏମିତି ମାନେ ଭିତରୁ ବାହାରିବ ତ ସେଇ ଟାଇପ ର ମଜା ନବାର ଅଛି 15 ଦେଖ ଭେରି ଗୁଡ assertion reason ବଡ assertion ଆଉ ବଡ reason ଅଛି ଟିକେ ମୋଟା ହଁ ଦେଖିକି କର ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ବି ଏମିତି କର ତମେ ସାଲ୍ୟୁଟ ଗଧିଆ ଦଳ ହଁ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ବି କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛୁ ବେ କହିବୁ ନା ହଁ ଦେବସ୍ମିତା ସେଇ ତ ପଜିଟିଭ କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ବଢିଆ both true R is the correct explanation ठीक तो कलो आओ ठीक ठीक children with learning disabilities such as dyslexia often face challenges in reading writing spelling but their intellectual abilities may be normal or above average yes hey pare early diagnosis and intervention can significantly improve their learning outcome अच्छा yeah ठीक अच्छी a child with learning disability requires social accommodation such as modified teaching method extra time for task ଏଗୁଡା କରିଦେଲେ ହେଲା ଆଉ କଣ ତ ଠିକ ତ ଅଛି ହଁ ନିଅ ଆଜି ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଭିତରେ ପଶିଯାଅ ଟିକେ ଏତିକି ପେସେନ୍ସ ଦେଖେଇଲେ ହେଲା ଆଉ କଣ a child with cerebral palsy yes correct see modified classroom furniture activities to accommodate child's physical limitations while encouraging inclusion and interaction with peers କାହିଁକି ଦେଖ ଏଠି କହିଛି ଛୁଆର ପୁରା ସିପି ଅଛି ମାନେ ये cerebral palsy may struggle with tasks such as walking, writing, controlling hand movements, ସବୁଥିରେ problem ସେ face କରୁଛି physical accommodation ହଁ ତ assistive devices ତାର ଦରକାର ଅଛି ensure they have access to learning ତ inclusive classroom ରେ ଆମେ କଣ କରିବା furniture ଦବା activities accommodate ସବୁ କରିବା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିଏ କରିଛ ନା ସେ ଆଉ ରହିବନି ସେଠି ଆଉ ଏକ୍ସାମରେ ରହିବନି କୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ରହିବନି କହୁଛୁ ହେଲା କର effort and ଯୋଉଠି ମୁଁ କଭର କରିଦଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ as it influences the effort and persistence
क्वेश्चन पढ़िया आगु केमती करूछ टिके मते कहो ना प्लीज 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 क्वेश्चन न पढ़ी आंसर केमती करूछ टिके प्लीज कहो कहीं मते तो बहुत टाइम लगे क्वेश्चन पढ़िया सीधा आंसर पढ़ी दउछ हाँ offering reward for every small complete thereby encouraging external validate setting challenging goals that are attainable allowing students to experience a sense of competence and accomplishment नहीं की अच्छा टीचर डायरेक्टेड कंट्रोल ओवर काटी देलो मेमोराइजेशन काटी देलो या मु कौन एटी बसी भकुआ भावुच मु जानी पारुनी तमे किए पढ़ुच क्वेश्चन किए न पढ़ुच किए सीधा ऑप्शन को जाओ मु जानी पारुनी भावुच अध्या दल हाँ तुम प्रकृति आ मते अजଣା अछि हाँ लाज नाई रे अरे एते बड़ क्वेश्चन मनुष्य परिश्रम करी आनी पकेला ए पिला पढ़िबे केते पैशेंस अछि तांकर देखिबा केते तांको भीतर धैर्य एतक पढ़िकी तार आंसर करेबे एनालिसिस करे बकुआ बनौछ मास्टर को बुझिलो एनीवे you are successfully vacuated your teacher so right answer is B ठीक अछि एबे अरे सेमती करनी क्वेश्चन टा पढ़िबो ना केते फसी जियो जे देखो देखो कि पुणी गोटे आंसर कर देलानी पट हे प्रभु सब तक तो सही पुणी गोटे भूल करथांत गाली करंती मु तो गाली भी करि पारुनी अच्छा सीसी देखिलो केवल कॉम्प्रिहेंस कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन देखिलो तळको आसलो फोकस ओनली ऑन काटी देलो यूजिंग रेगुलर क्विजेस peer assessment self assessment teacher observation track students progress throughout year encouraging learning improvement in various area अच्छा ignoring देखिदेलो काटी देलो यूज a single annual examination देखि काटी देलो हाँ छक 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 शून्य शून्य इज द राइट आंसर हे भगवान मु उफ ओ प्रभु मु भाबुजा कि क्वेश्चन पढनै आज पिला सब आंठे जिवे पूरा आंठे की पेटे की आंसर करिवे पूरा फेल सब हेबे देखला बेलको क्वेश्चन पढनांती उडौछन्ती के पढिबो सीसी इज एन अप्रोच जानिबो ना कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ता कोन that focuses not only on academic performance but also overall development of students including their physical emotional social cognitive growth cc aims to provide holistic view एतिकी देखिए कम से कम एतिकी तो पढ़ कौन से कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी अलाइन्स मोस्ट क्लोजली विथ द प्रिंसिपल ऑफ सीसी एतिकी पढ़ हो कर 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 उल्टा ही गला कि अरे मैंने मु भाबुଥିଲି छुआ पेटाइबे देखला मास्टर पेटाई गला concept of individual differences emphasizes that every child has a unique pattern of growth and learning. Teachers should recognize the differences and provide dash to meet. Differentiated instruction by individualized education plan. नहीं कि IEP or differentiated instruction तो समस्तों पे अलगा as per the need, unique growth and learning. हो चलो करो करो धैर्य सहित आराम से पढ़ो क्वेश्चन को अरे मु बहुत भाभी चिंती कि जगन्नाथ आनी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आनी मु भाविली जे 100 के हेची पूरा पिला अवस्था खराब करी आज जाई देखला बेलको क्वेश्चन टोटल पढ़िबार नहीं हाँ पुणी ठीक करिचो यूजिंग मेथड
such as mindfulness, relaxation technique, and providing a safe space for emotional expression to help students regulate their emotions, thereby enhancing their cognitive performance. Focusing only on content delivery, giving students extra work and tasks keep them busy from any negative emotion. ଏଠି କହିଛି emotions are closely linked to cognitive process involved in learning. ତ ଏଠି ପୁଣି punishing students for expressing strong emotion in the classroom. ତ punishment ତ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ଅପସନ ଗୁଡାକ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ କି? ହଉ ହଉ ଏ ଦେଖ ଏଥର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଅମିତ। କଣ ଇଏ କଣ ଏଗୁଡା? ହଁ ନଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଖେଳଟା ହେଇଯାଉଛି, ନହେଲେ ଓଲଟା ହୁଅନ୍ତା। ଏନିୱେ ଠିକ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଅଟିଜମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିଜର୍ଡର ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜର୍ଡର ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅଟିଜମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିଜର୍ଡର ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ଏ ରେଞ୍ଜ ଅଫ ବିହେଭିୟର ଦ୍ୟାଟ୍ may include difficulty with communication, social interaction. Autism spectrum. The autism spectrum encourages the child. Acha, last पचास which of the following strategies is most effective for supporting a child with autism in mainstream classroom? Then encouraging the child to engage in unstructured social activities without any specific guidance, using visual schedules, providing clear and consistent instruction and offering breaks to manage sensory load. जोटा तमे करिछ। ममता क्या बोलू छो? Limiting the use of limit करिदबा any structured learning material, and as these may cause the child to become anxious. Anxious करिबा तो कथा, anxious करिबाटा को बंद करिबा कोन ठीक हबो कि? नहीं कि? And providing additional assignments to keep the child occupied while other students engage in group activities. माने एठी separate strategy करिदबा बोली कहूछ। सेटा भी ठीक न हो। Inclusive education कथा कहूछ। हाँ प्रीति ठीक कहिछ तमे। तमे ठीक आइडिया, वेरी गुड, थैंक यू। मन को आसिला। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन छोटो आ ऑप्शन बड़ करिवा। Howard Gardner's theory of multiple intelligence emphasizes that individuals have different kinds of intelligences, such as linguistic, logical, mathematical, musical, and interpersonal. A teacher who applies this theory in the classroom would. Yes. जेहेतु varieties of learning style अछि तेणु incorporate diverse activities like storytelling, experiment, group discussion, music based learning to address different intelligence. Very good. Focus only on, avoid student centered, same teaching method, एगुड़ा केबे भी हबो नहीं। Which of the following practices aligns with constructivist approach to teaching and learning? देखो ହେଇଗଲା। ଆଉ କରିଦେଲ।
ସବୁ B होची कि encouraging learners to engage group discussion and build new knowledge. During the annual examination, the teacher creates a comprehensive question paper designed to evaluate students' overall understanding of all topics taught during the year. The scores are then used to rank students and report their academic achievement to parents. Which type of assessment? Assessment of learning বা summative assessment. नहीं कि? So it is correct. At the end of teaching learning process, the summative hobo acha. A classroom has students from diverse cultural backgrounds and varying abilities. Including a child with a hearing impairment. The teacher ensures that all students have equal access to learning by using visual aids, providing a sign language interpreter, and promoting peer collaboration. That principle of inclusive education. What principle of inclusive education is being demonstrated in this scenario? Co principle to use kara jayechhi. Yes, ensuring equal opportunities for all learners by addressing their diverse need based assess କରିକି need based facilities ଦବା ନାଇଁ କି ବାକି ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଅଛି ଏବିଡି A teacher gives her students the following activity in a science class. Yes, Priyanka. Question बड़ा किंतु आंसर बुझले इजी अछि नै कि बढ़िया इजी तो अछि हो थैंक यू सरस्वती सुंदर क्वेश्चन माने कोन फेयर एंड लवली लगे कि आछि हां Yes, they can be ability to analyze problems, evaluate alternatives, and justify decisions. कहीं प्रो कन सबू देखुची नहीं कि and explain करुची how you would convince others in the village to implement your ideas. What critical thinking skill are the activity designed to develop among students? तेणु students ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ability develop होउची critical thinking skill develop होउची analyze problems, evaluate alternatives, and justify decisions. अच्छा अमोल कौन करवा आमे ये गोटे परिवार कथा तो एक्सप्लोरिंग गोल्स परिवार कथा ये in a social studies class a teacher presents two contrasting opinions on the use of technology in education. Teacher presents two contrasting opinions on the use of technology in education. Students are asked to dita sentence कहले dita opinion देले teacher social studies class रे use of technology in education को नहीं कहले identify the arguments in favor and against the use of technology, evaluate validity of the evidence supporting each argument, conclude which opinion they agree with and justify their choice. What aspect of critical thinking at use ala एडा पुणी सी our right answer is developing reasoning skill, analysis and independent conclusion. Forming an independent conclusion. बढ़िया
ठीक ठीक ठीक। अनमोल, हरप्रिया, ममता, वेरी गुड। रश्मि रंजन, सुरेश, बहुत बढ़िया। ज्योति रंजन, कौन हो? करेक्ट। B. Emphasizes student-centered experiential learning by engaging students in real-world problem solving. कहीं केटी कोई ची adopt project-based learning approach. नहीं कि a project कौन? She assign a project where students investigate how waste is managed in their neighborhood. हाँ ये तो बढ़िया टॉपिक टा। हाँ किए कौन कचरा फोपाडुची बाहर को ताको एमती अनेक बसथियो ए प्रोजेक्ट रे नहीं। हाँ थैंक यू गायत्री एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू आल्सो। तो ठीक अच्छे इटा हाँ कहीं कलेक्शन ऑफ डाटा इंटरव्यू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड फाइंडिंग थ्रू चार्ट्स एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन हाउ डज एक्टिविटी अलाइंस विथ द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कोई प्रोग्रेसिव एजुकेशन कथा किए कहबो ऑप्शन बी ही कहूछ। Cool learning एटी पचार which learning theory is best reflected in this approach? Each group is देखो तांको दिया गला कौन सीड दिया गला सॉइल दिया गला पॉट दिया गला प्लांटिंग सीड्स वाटरिंग देम डेली एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रोथ ओवर 2 weeks तो एटी रियल लाइफ से तो कनेक्ट करा गला सनलाइट वाटर केमती प्रभावित करूची ग्रोथ को सेटा से देखुचंती तेणु एटा कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी आज स्टूडेंट एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज बाय एक्सपीरियंसिंग एंड ऑब्जर्विंग द प्लांट ग्रोथ प्रोसेस याठू भलो ऑप्शन अछि कि नाही सो यू आर करेक्ट ना कौन सरोज तृप्ति शिखा प्रकाश संजय दीर्घेश्वरी ममतामयी शैलाजा चलछि सबू सरोज गायत्री सविता ठीक अछि सोनाली लक्ष्मीकांत यस स्वाति शिलू जयंती झरणा वेरी गुड पार्टिसिपेशन। हम्म। What does this approach illustrate about how students learn? The through lecture and notes is not a good way. Memorization. Chakka. All students learn at the same pace. Gola. Activities like these are unnecessary. The real life hands-on activities, complex concepts are taught using real life and hands-on activity. या टू बढ़िया किछ नहीं. Last two questions. दुईटी रहिला. আজি আজি गोटे ना मते माने एमिति अवस्था कल एथर आज दिनटा आज जो क्वेश्चन एडे देखो ये पढ़िलेनी ए संभावना खाली माड रे माड खाली अमूल खाली माड सिलू अविनाश हे रे प्रतिभा कौरव गायत्री रे पोष हे गला किछि पढुनटी एटी देखिलो what core principle of progressive education reflected in this approach अच्छा core principle of progressive education आज्ञा तो आमे जानिछु आ what काई की पढिबु आमे सीधा गलु टीचर सेंटर छक्क स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग छक्क rigid adherence छक्क without flexibility छक्क तेणु ऑटोनॉमी क्रिएटिविटी कोलैबोरेशन आज्ञा सी हबो आंसर खेल शेष हेते तेमे किंती पढुचो क्वेश्चन आमे जानि गलुनी ऑप्शन सब को तमे कब्जा कर देछो मु क्वेश्चन को धरि के बसछियो मु क्वेश्चन पकई छे आज छुआ पूरा सी कोन करूथले आरटा भी करिवे
सी तो करुले आरटा भी करेंगे कहली देखला बेलू सब हाँ ये से स्पेशल यूटिलिटी भाया है कथा एनीवे लास्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ सुधांशु कंग्रेचुलेशन हो गायत्री धन्यवाद आकाश So a teacher designs an activity where students work in groups, create model demonstrating the water cycle. After the activity, students are actually आज क्वेश्चन गुड़ा बहुत बढ़िया नहीं केते पॉजिटिव जिंस कहल जे बनैछि केते वेरी गुड शाबाश जे बने दे आर पियर्स क्रिएटिविटी एक्यूरेसी प्रेजेंटेशन केते बढ़िया बढ़िया लाइन गुड़ा व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट डज दिस रिप्रेजेंट्स कहला लास्ट रे हेलो तुम मार दलो आज लर्निंग आज स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज इन peer assessment and self reflection कहीं ना एठी evaluate their peers models based on criteria like creativity accuracy presentation they also reflect on what they learned हेगला कोना self reflection और peer मान को द्वारा कोना हेगला peer assessment हाँ oh thank you everyone for your active participation ये थिला सेलिब्रेशन पार्टी थिला आ मागिबोनी हला आ जो रात रे अरुआ डालमा खट्टा होची अरुआ बाडिया डालमा खट्टा हला ये खाया कथा आस जियो कदली पत्र रे परोसा जीवो धन्यवाद समस्त को थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन थैंक यू आज होस्ट उड़े देलो मते मोर पूरा बेहोश कर देलो मते धन्यवाद समस्त मु भाबुची आज केजानी बहुत रेयरली केतटा जदि कार भूल हेतिबो गोटे दिडा नहले जो माने एक्टिवली करिचो एक्चुअली फील करिचो एंड भीतर पसिचो टिके देखिचो ताले आराम से ठीक करिचो सो थैंक यू again everyone for your active participation stay connected with exploring goals and be a part of easy family always once again congratulations to easy family each member of this family this platform enriched it and helped to reach here so samastamku many thanks and stay connected keep exploring jai jagannath